Bridal Craft, The Wedding Mall, Pan Bazaar, Tirur. കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുവാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും എത്തി സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്ത ടീം ലീഗ് ദേശീയ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി MP മുഹമ്മദ് കോഴയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നാണ് UP-യിൽ നിന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാന മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മഥീൻ ഖാൻ, സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് എന്നിവർ. മഥീൻ ഖാൻ വരുന്നത് ലക്നൗവിൽ നിന്നും മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് വരുന്നത് ഉന്നാവോയിൽ നിന്നുമാണ്. UP വർഷങ്ങളായിട്ട് BJP ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. അവിടെ നിന്ന് കേരളത്തിൽ UDF സംവിധാനത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടി മത്സരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് UP-യിൽ നിന്ന് ഇവരെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവരോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ഇവിടുത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ നേരിട്ട് അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറയട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. मदीन साहब, वो अभी आप इलेक्शन के लिए इधर ही देखने के लिए आया. आप एक स्टेट मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट है, इसलिए आपको भी ये आने वाला टाइम में इसका बारे में थोड़ा सिखाने के लिए अभी इधर का माहौल कैसा चलता है ये देखने के लिए आ गया. आपको क्या क्या समझ में आया ये इलेक्शन का बारे में, केरला का सिचुएशन, स्पेशली तिरूर, ये तिरूर कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन प्रचार अब देखा होगा, इसका बारे में आपको क्या सोच में आया वो थोड़ा बताओ. ये केरला का अपना न्यूज़ 99 का व्यूअर्स के लिए थोड़ा बताओ. Firstly, I congratulate News 99 Kerala. This is the very nice time, and I hope it is the time of change. Whatever the Kerala peoples are suffering last 10 years, and I have gone to market and some places. Most of the peoples are saying that it is the change time. This is the time of UDF. Keralam Jaikum, UDF Naikum. This is the time. UDF Naikum. UDF is coming, and the peoples, they feel this is the very nice time, and they also feel, and they also said to me this is the very good time. And I have seen one more thing, sir, because the girls and the women and the guys, they want to change, and they are participate many times. I have done lots of the girls and women are in the meetings. It is not in UP. Mostly the women are living in their houses, not taking a part in the politics. But it is the change here. I have think. I always talk with each other that the Kerala's nurses are famous in all over India, especially in Lucknow. There is the Fatima Hospital. Most of the nurses are from Kerala. Whenever we have before coming Kerala, I have gone there and met some nurses, and they were saying that same thing. It is the time of change over there. So this is the very nice time, and I hope this is the UDF time. This is the time of UDF.
The participant isn't limited to homes, and I think that's very good time for UDF. I am saying that E Modi good day, E Modi good day, Tallam namme, Igne paye pudyatan, Nammal Rapaya, Vijayam Licham Maki, Kudi Kunna Varani, Vijayam Kerala Jaikum, UDF Naikum. This is the time of UDF, and I think LDF is going on. They have completed their time, and whatever they think that, I think this is the slogan, Hum Jeetenge, UDF Zindabad, Modi Pe Naya Nai is disclosed. I have met many women and girls, and most of the peoples and the shopkeepers also. They are saying they have collaborated Modi and Pe Naya Nai. नहीं ये इधर अभी आप ये स्ट्रीट में ये इलेक्शन प्रचार का रैली आप देखा होगा। ये रैली में ये मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूथ एंड औरत वुमेन गर्ल्स बॉयज एंड गर्ल्स एवरीवेयर वो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग होता है। This is the time of change. Whenever it comes, the voice from the house. This means means, LDF, CPM. CPM before the 35 years before बंगाल में उधर ही ये रूलिंग में CPM था। ऐसा कंटिन्यू 35 years वो लोग उधर ही रूलिंग किया है। इसका बाद अभी किधर भी देखेगा तो CPM नहीं है। अभी इधर भी ये 10 साल से ऐसा हालत बनाया। क्यों? इधर का ये नौजवान लोग को कुछ काम नहीं है, कुछ बिल्कुल एम्प्लॉयज और पूरा से पूरा ये यूथ ऐसा किधर भी जाता है उधर खबर। I just want to something that in West Bengal there is the left parties over there, and where is the education ratio over there? UDF is here, IUML is here, and this is the ratio where 100% education was here. This is the cause of IUML and ally with UDF. This is the matter of UDF. UDF thinks about the love. UDF thinks about the constitution. UDF thinks about the equality. UDF thinks about the to serve the peoples, and they want their futures. The young girls and the women are also seeing this, and they are suffering their houses, and youth are suffering for the education, because if there is nothing money and their families are not getting more money, and how he can teach them. ओके मोहम्मद अहमद, ये अभी आप दोनों साथ में आया था जी, इसलिए आप लोगों को मालूम है अभी ये यूथ का हर ये इलेक्शन प्रचार का ये मोड केरला में कैसा होता है। मैं हिंदी में मैं बोलूँ। हाँ, केरला प्रचार में हम लोग आए हुए हैं और देखा कि यहाँ का यूथ UDF से सहमत है, स्ट्रांग है, उसको चाहता है। हम लोग करीब 5 सीटों पर गए तो वहाँ देखा यूथ भी और महिलाएं भी वो UDF से इंटरेस्ट मतलब जो है मोहब्बत भी करती हैं, हर प्रोग्राम में आती भी हैं और वो साथ में चलने की कोशिश भी करती हैं। और यहाँ पर ये UDF इसलिए की कामयाब होगा जो IUML ने और UDF ने जो शिक्षा पे काम किया है, एजुकेशन और मेंची नर्सें हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा काम किया है। इसीलिए रोज़ी रोज़गार युवकों को दिया गया है। हमारे क्या यूपी में जो नफरत का भाव है
यहाँ पर आपकी मोहब्बत है। ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब आपस में एक है, इसीलिए केरला का तरक्की है। केरला बहुत आगे बढ़ा है। अब आप यूपी में देखिए, वहाँ पर डाउन जा रहा है। केरला जो है, आप जो है मतलब आप जो है सऊदी जाइए, बहरीन, दुबई, कोई किसी कंट्री में जाइए, केरला का नाम सबसे ऊपर है, दूसरे राज्यों का नाम नहीं है। इसलिए नाम है, केरला के लोग मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, ईमानदारी के साथ साथ में शिक्षक होते हैं और वो कामचोर नहीं होते हैं, इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। और जो राज्य आपका तरक्की चाहता है उसको मेहनत करना पड़ेगी और उसको एजुकेशन के बारे में, भाईचारे के बारे में सोचना पड़ेगा। जहाँ पर भी नफरत रहेगी वो राज्य कभी कामयाब नहीं हो सकता। आज केरला पूरी दुनिया में नाम है और पूरे भारत में 31 राज्य हैं, उन सबके नाम जाइए, अमेरिका नहीं मालूम है, इंग्लैंड जाइए नहीं मालूम है, तुर्की जाइए नहीं मालूम है। तो केरला का नाम लोग क्यों जानते हैं? केरला इसलिए जानते हैं, यहाँ पर आपके 99% जो है आपकी एजुकेशन है और यहाँ पे नर्सें बहुत अच्छी माशाल्लाह है और यहाँ पर अच्छे अच्छे कॉलेज हैं और यहाँ पे कारोबार भी है और यहाँ पर आपस में भाईचारा है। ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब एक में रहता है, इसलिए यहाँ पे एका है। ठीक है, ഇപ്പോൾ ഇവരെ ആയിട്ടിപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത്, അവർ ഈ കുറഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും അവിടുത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ UDF സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലത്തെ ഈ ദുർഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും യുവാക്കളും അടങ്ങുന്ന വലിയ ഒരു ജനസഞ്ചയം തന്നെ ഇതിന് പിന്നിൽ അണിനിരന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്, അതാണ് അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഫിറമിലേക 35 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത പാരമ്പര്യവുമായി എന്നും എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ടെന്ന വിശ്വാസം. ബാസിത് വെഡിംഗ് മോൾ, ബാസിത് ആർക്കേഡ്, പൂങ്കോട്ടുകുളം, തിരൂർ.